हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विच बेस आपण बहुत जन पिला आज स्टेट एमएड एग्जाम देते तो स्टेट एमएड एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न जब आम देखा तो पूर्व वर्ष भली रही मॉडरेट कहीपर ना बहुत इजी रही ना डिफिकल्ट लेवल रही तो यार अनऑफिशियल आंसर कि आज आम चेक कर नवा तो सीरियल वाइज 1 ରୁ 100 यहाँ सेट ए रो मु आंसर कहि तुम्हें मैंने से अनुसार सेट बी सांगे मैच कर नब तो फास्ट क्वेश्चन थिला 1 नंबर सेट ए रो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन एज ए प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तो यार आंसर हूँ क्रिटिकल एनालिसिस एंड कंटिन्यूअस सेल्फ इवैल्यूएशन। सेकेंड क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू रूसो द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी तो ये जो 4टा ऑप्शन था से डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू नेचुरल इंस्टिंक्ट ठीक हम। 3 नंबर क्वेश्चन जब देखा एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन वाज एम्फासाइज्ड बाय तो तुमने सोशलाइजेशन देखी जब बाइगट्स की भाभी तो बाइगट्स की यार आंसर नुह यार आंसर हो अगस्ट कोम्टे। नेक्स्ट दि प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हेड हार्ट एंड हैंड्स 3H समझ जानी थो। 5 नंबर क्वेश्चन था टागर्स एम ऑफ एजुकेशन वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट यहाँ आंसर हम क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन मैंने जब नेशनलिज्म एंड कल्चरल इंटीग्रेशन भी लगुला तो यहाँ टी कन्फ्यूजिंग थिला किंतु यार आंसर क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट फॉर्मल एजुकेशन तो यार आंसर हो इंस्टिलिंग इंटरनल डिसिप्लिन एंड फॉलोइंग फ्लेक्सिबल करिकुलम। नेक्स्ट एजुकेशन एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज तो यार आंसर कौन हम बाय लिमिटिंग एक्सेस टू डाइवर्स व्यू पॉइंट बाय प्रिजर्विंग ट्रेडिशन देख 3टा जाक पॉइंट नेगेटिव रे थिला किंतु बाय स्प्रेडिंग न्यू आइडिया इनोवेशन तो तुम्हें जदि ऑप्शन एलिमिनेशन फॉर्मूला पकेब तो ऑटोमेटिक आंसर हो। नेक्स्ट थिला 8 नंबर व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन तो यार आंसर हो इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। नेक्स्ट नेम द फैक्टर व्हिच हिंडर्स इन प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी तो यार आंसर हम कंपटीशन। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ एजुकेशन फॉर ग्लोबलाइजेशन तो यार आंसर हम ब्रॉडेनिंग स्टूडेंट्स वर्ल्ड व्यू एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट जब हम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन ऑन नेशनल डेवलपमेंट तो यार आंसर हो इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हाउ डज एजुकेशन हेल्प इन क्रिएटिंग ए स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट तो यार आंसर हम प्रोवाइडिंग बेसिक लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। 13 नंबर रही है वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रे जब आम इन्वेस्ट कर कौन ना प्रोड्यूसिंग स्किल्ड मैन पावर। नेक्स्ट हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल व्हिच इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो यहाँ हूँ बाय एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडाप्टेबिलिटी तो ये सब भर इंट्रोड्यूस कराए। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन तो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी तो यहाँ हूँ आंसर। नेक्स्ट हूँ आरटी एक्ट तो आरटी एक्ट समझ जानते 86th अमेंडमेंट तो बहुत इजी यहाँ पूर्व वर्ष भी जो क्वेश्चन देखो आरटी ऊपर था एथर भी सेम थिला तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग इन स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन एस्टाब्लिश टू इम्पार्ट एजुकेशन तो यार आंसर हम आर्टिकल 28। नेक्स्ट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्ट्रांगली रिकमेंड दैट टीचिंग ऑफ ईवीएस एट द प्राइमरी स्टेज शुड प्राइमरली एम्ड एट तो यार आंसर हम linking classroom learning to life outside the school। Next, a common educational structure of 10 plus 2 plus 3 for the whole country was recommended by कहा द्वारा एजुकेशन कमिशन 1964 to 66 यहाँ द्वारा होता कौन 10 plus 2 plus 3 प्रोग्रामटा इंट्रोड्यूस होता स्ट्रक्चरटा। नेक्स्ट हूँ तुमने कमेंट रे कहीपर एजुकेशन कमिशन 1964-66 को आउ क्यों कमिशन कहुए तो नेक्स्ट थिला द प्रोग्राम व्हिच वाज लॉन्च्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द एनपी 1986 टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्राइमरी स्कूल कौन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलसेंस, तो डेवलपिंग ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट हूँ अकॉर्डिंग टू एरिक्सन व्हिच स्टेज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अकर्स ड्यूरिंग एडोलसेंस, यहाँ हूँ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट थिला ए टीचर कैन बेस्ट सपोर्ट एडोलसेंट स्टूडेंट बाय एनकरेजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, 23 नंबर ए। नेक्स्ट थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ लर्निंग डिफरेंस, तो यहाँ हूँ यूनिफॉर्म स्कूल करिकुलम। नेक्स्ट थिला ए टीचर नोटिसेस दैट वन स्टूडेंट लर्न्स बेस्ट बाय लिसनिंग टू लेक्चर्स व्हाइल अनदर प्रिफर्स, तो ये लर्निंग डिफरेंस आसूची तामाने लर्निंग स्टाइल दिस डिफरेंस इज ड्यू टू लर्निंग स्टाइल। द एरिया ऑफ लर्निंग अफेक्टेड बाय डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मैंने जानते रीडिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग को लेकिन से जो प्रोब्लेम देखा जाए, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग, तो यार आंसर हम यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड्स। कहीं ना ये क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल मेथड ऑफ स्टडिंग लर्निंग बिहेवियर, तो यहाँ टी कन्फ्यूजिंग रही जदिव आंसर साइकोलॉजिकल टेस्ट हम किंतु केतरे जगार इंटरव्यू केस स्टडी को भी गोटे फॉर्मल मेथड ऑफ स्टडिंग लर्नर बिहेवियर बोली मना जाउछि, तो देखा जाऊ यार आंसर ये टिके लिटिल कन्फ्यूजिंग अच्छी। नेक्स्ट होची ए टीचर ऑब्जर्व्स ए चाइल्ड इन डिफरेंट सिचुएशन ओवर टाइम विदाउट इंटरफियरिंग, दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, ये आंसर होची नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट होची व्हिच मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग एन इंडिविजुअल लर्नर्स पर्सनल चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट, ये हूँ केस स्टडी मेथड। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्फासाइजेस ऑन कौन रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट, यहाँ तार थिला। नेक्स्ट हूँ बाइगोट्स्की थ्योरी, दि टर्म स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू कौन ना दि टेम्पोरारी सपोर्ट गिवन टू लर्नर्स टू बी ग्रेजुअली विड्रॉन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमा टू इनकॉर्पोरेट न्यू इनफॉर्मेशन इज कॉल्ड कौन आकोमोडेशन। देख पियाजेट भी पकई बाइगोट्स्की भी पकई, तो ये सबू इम्पोर्टाट थिला बोली मुझे तुमको कही। नेक्स्ट हूँ कौन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस कैटेगरी, तो यहाँ हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट राभेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इज एन एग्जांपल ऑफ ए टेस्ट दैट मेजर्स कौन नॉन वर्बल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। नेक्स्ट हूँ द स्टेज इन द creative process where an individual takes a temporary break allowing ideas to mature subconsciously, तमाने कौन incubation। नेक्स्ट हूँ द कैरेक्टरिस्टिक कॉमनली एसोसिएटेड विथ क्रिएटिव इंडिविजुअल इज कौन रिस्क टेकिंग बिहेवियर, तो यहाँ हूँ गोटे क्रिएटिव इंडिविजुअल सब कौन सी रिस्क टेकिंग बिहेवियर तार रुए, रिस्क टेकिंग बिहेवियर हेले ही सी क्रिएटिविटी ता भितर स्टार्ट हम। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग मोड्स व्हाट डज एसिंक्रोनस लर्निंग रेफर टू, तो यहाँ आंसर होची लर्निंग दैट डजंट अकर इन द सेम प्लेस और एट द सेम टाइम। नेक्स्ट होची व्हाट रोल डज द फिजिकल एनवायरनमेंट प्ले इन मैनेजिंग ए हेटेरोजेनस क्लासरूम, तो यहाँ होची इट क्रिएट्स ए सेफ एक्सेसिबल एंड कंड्यूसिव स्पेस फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ कैन ए टीचर क्रिएट ए क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट फोस्टर्स क्रिएटिविटी, यहाँ हूँ एनकरेजिंग ओपननेस इन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। नेक्स्ट हूँ द मोस्ट कम्प्रेहेंसिव डेफिनेशन ऑफ ए करिकुलम इज, तो यहाँ कम्प्रेहेंसिव डेफिनेशन जब देखा यहाँ हम द ओवरऑल प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट थिला ए करिकुलम दैट इंटीग्रेट्स नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट इज कॉल्ड, यहाँ कौन जेहेतु डिफरेंट ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट तमें कौन इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। द फाउंडेशन ऑफ करिकुलम व्हिच फोकसेस ऑन वर्थवाइलनेस ऑफ नॉलेज इज, यहाँ कौन फिलोसॉफिकल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, तो यहाँ को कंसीडर करा जाए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पूर्व वर्ष भी पढ़ता तो ए वर्ष भी रिपीट होती नीड्स असेसमेंट एंड एनालिसिस, केतटा स्टेप थाए टोटाल 6टा स्टेप थाए, तो 6टा स्टेप फास्ट स्टेपटा हूँ नीड्स असेसमेंट। नेक्स्ट हूँ कौन एनसीएफ 2005 सजेस्ट ए शिफ्ट इन टीचर एजुकेशन फ्रॉम कंटेंट बेस्ड लर्निंग टू कौन रिफ्लेक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स दैट टीचर एजुकेशन शुड प्रिपेयर टीचर्स टू, यहाँ भी टी कन्फ्यूजिंग अच्छी कहीं ये आंसर अलाउ डिस्कसन्स इन क्लासरूम भी हो पार
ଆଉ ଯଦି NCF 2005 ଦେଖିଥିବ ତ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ICT ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍ ଇନ୍ ଟିଚିଂ, ତ ICT କଥା ବି ସେଥିରେ ମେନସନ୍ ଥିଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟ୍ରିକି ରହିଛି। 48 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟ ଡିଫାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଂ ନଲେଜ୍। ଏ ବାକି ତିନିଟାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। Which of the following best describes the ethical principle of fairness in teaching, treating all students equally and without any bias? तो यहाँ हूँ तार ethical principle. Next is what is the primary duty of a teacher according to professional ethics? तो यहाँ हूँ ensuring holistic development of student. Answer B. 51, which one of the following action is unethical? Unethical कौन हुआ? Accepting gifts from student, normal question. 52, what does teacher accountability primarily refer to? এটা হচ্ছে কমপ্লিটিং দ, ହଁ এইটা ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଛି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଦ ସିଲାବସ୍ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଇମେରୀ କନସର୍ନ ଟିଚର୍ର କ'ଣ ଥାଏ, କେମିତି ସିଲାବସ୍ ଜଲ୍ଦି ସାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବେ ବିଙ୍ଗ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲବିଙ୍ଗ, এইটা ବି ଆନ୍ସର୍ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଦ ସିଲାବସ୍ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ କରେ ତାହେଲେ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀଲି ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ପାଇଁକି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆନ୍ସର୍। 53, ଇନ୍ ଦ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫେଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନଟ୍ ଗିଭେନ୍ ଆଟେନସନ୍? କେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆଟେନସନ୍ ମିଳେନି? ଇଭାଲୁଏଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ। କାରଣ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫେଜ୍ରେ ଏ କାମଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ, ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବେଳକୁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟିପିକାଲି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫେଜ୍? ରିଭ୍ୟୁଇଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍, ଏଇଟା ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ୍ର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବେଳକୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଟି? ତ ଏନକରେଜିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଏଇଆ ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। 56, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ଦ ଟିଚର୍ସ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍? ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବେଳକୁ କ'ଣ ଟିଚର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବ ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ଅନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍, ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ସେଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ 57, ହ୍ୱାଇ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ଅନ୍ ଦ ଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫେଜ୍? କ'ଣ ପାଇଁକି ନା ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଏରିଆ, କେଉଁଠି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। 58, in the interactive phase of teaching, how can a teacher address diverse learning need? By using differentiated instructional strategy. What type of learning environment does the NCF 2005? NCF 2005 କ'ଣ କେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି ନା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଟରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ପେସ୍। ତ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ NCF 2005 ସଜେଷ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍? ଦେଖ ଏଠି ହେଉଛି टीचर्स नीड टू आक्ट एज ए फैसिलिटेटर, एटा समस्त शुणुव नॉर्मल सब यूज करा टीचर शुड बी ए फैसिलिटेटर वन। सो एटा हूँ कौन 2005 वाइज एटा कहुई। नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? इक्विटी माने कौन ना एक्स्ट्रा रिसोर्स एंड सपोर्ट आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट हु नीड देम टू एंश्योर ऑल स्टूडेंट हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। नेक्स्ट देइथिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी? तो यार आंसर एक्चुअली मत लगुला प्रोवाइडिंग आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग फॉर स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। कारण डिसएडवांटेज बैकग्राउंड को एक्स्ट्रा स्कूलिंग दबा इक्वालिटी आने कि यहाँ मत ठीक लगुन किंतु केतटा माने जगार चेक कलु तार आंसर ऑफरिंग द सेम टेक्स्ट बुक टू एवरी स्टूडेंट टू मेंटेन पैरिटी यहाँ आसूँ। तो देखा यहाँ कि फाइनल आंसर कि डिपेंड करा पड़ो। नेक्स्ट 63, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन? तो कौन ना इक्वालिटी इम्प्लाइज ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट द सेम, इक्विटी कौन इनवॉल्व ट्रीटिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक नीड। तो डी हूँ आंसर। नेक्स्ट हूँ इनक्लूसिव एजुकेशन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? इनक्लूसिव एजुकेशन कौन हुए इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट हूँ 65, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ समग्र शिक्षा अभियान? समग्र शिक्षा अभियान कौन थी ना कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एक्जिस्टिंग वन। व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल कमिशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR RT एक्ट कौन थी ना टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RT एक्ट।
Which of the following is a key focus area of Ramsar? रामसार कौन थिला ना इम्प्रूविंग इन्फ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इन सेकेंडरी स्कूल कारण रामसा कौन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा शिक्षा अभियान तो ये माध्यमिक शिक्षा उपर फोकस कराइला तो इम्प्रूविंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स. नेक्स्ट द प्राइमरी फोकस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इज ऑन प्रोवाइडिंग ए होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स. 69 थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग आउटकम्स. तो यहाँ हूँ एम्फासाइजिंग इंटरेक्टिव एंड कोलाबोरेटिव लर्निंग ये दुटा पर एम्फासिस देव. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी समझ जानते डिजाइन एंड डेवलप इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्कूल्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एनसीटी. देखो एनसीटी हूँ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो कंडक्ट कौन कर सी तो कौटा नुह नॉट पचार तो टू कंडक्ट टेस्ट फॉर रिक्रुटमेंट ऑफ टीचर. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनईपीए. यार आंसर हो टू फोकस ऑन एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिसी एनालिसिस एंड मैनेजमेंट. नेक्स्ट था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर हु प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन. तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कौन था रेगुलर से आसेसमेंट करते और फीडबैक देते टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग को अधिक इफेक्टिव करने. Next 74 continuous professional development is so important for teachers in ensuring quality education. कौन पाई बिकज तांको अपग्रेडेशन दरकार अपडेट सब केमी रही. तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हेल्प टीचर टू स्टे अपडेटेड विथ द लाटेस्ट टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक. 75 थे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रैक्टिस दैट स्कूल्स कैन प्रमोट. यहाँ हूँ स्टेइंग अवे फ्रॉम स्वच्छ भारत अभियान कारण से स्वच्छ भारत अभियान में मिसवा को प्रमोट करेंगे से दूरे रही कहीं प्रमोट करेंगे. तो यहाँ आंसर रिड्यूस रियूज रिसाइकल. यहाँ कौन एम यार कौन ना मिनिमाइज वेस्ट एंड कंजर्विंग रिसोर्सेस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन गोल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. यहाँ मे बी क्वेश्चन आंसर एकाधिक हो पारे कहीं ये टू इनक्रीज द कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस देती. अवश्य एठी भी गोटे मेन गोल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो इम्पोर्टाट सबुठ कौटा सेमती देखो तो सहीटा हो पारे आंसर कारण से आंसरटा ही शो करोची चेक कले ना कि टू इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन नेचर टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एगुड़ा भी आंसर तो हो पार किंतु ताको ही फोकस दिखाई. Which of the following is the primary strategy for sensitizing learner to environmental protection. तो आंसर होची encouraging active participation in environmental awareness program and activity. देखो टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल लॉज भी गोटे माने स्ट्राटेजी थाए किंतु से स्ट्राटेजीटा प्राइमरी नो प्राइमरी मैंने फास्ट बेसिक जिनस कौन थाए तो सेटा होची अवेयरनेस प्रोग्राम ये करो. नेक्स्ट है पॉइंट आउट द वन व्हिच इज करेक्ट अबाउट फील्ड ट्रिप. कौन they allow student to observe environmental issue directly which promote experiential learning. Importance of observing world environment कौन ना provide student an opportunity to understand the significance of protecting the environment and take part in a related activity. 81 जो देखा which of the following is an advantage of implementing CC रो काम कौन थी ना it encourages holistic development by assessing all areas. Next, which of the following is an example of assessment of learning? Assessment of learning माने कौन जे midterm examination that evaluates a student's understanding about the course. तामाने लास्ट ये जो एग्जाम करे कि केमती स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग कौन अच्छे से जाना. असेसमेंट ऑफ लर्निंग जहाँ लर्न से कर असेसमेंट करवा. आइडेंटिफाई द प्राइमरी गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग. तो फॉर लर्निंग मैंने से लर्निंग पूर्व ही तमाने टू गैदर इनफॉरमेशन दैट हेल्प्स इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग ड्यूरिंग द कोर्स बेले कौन दरकार कौन कौन जगार इम्प्रूवमेंट दरकार तो सहीटा जानापी. तापर असेसमेंट आज लर्निंग कौन ये हूँ स्टूडेंट निजर चेक कर ए स्टूडेंट यूजिंग ए रूब्रिक टू इभालुएट देयर ओन वर्क. वैलिडिटी कौन ना द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू मेजर व्हाट इट पर्पज टू मेजर. नेक्स्ट हूँ रिलायबिलिटी कौन ना रिलायबिलिटी हूँ द टेस्ट इज कंसिस्टेंट इन मेजरिंग द सेम थिंग अंडर सिमिलर कंडीशन सबुटी सेम रोतु. तापर ऑब्जेक्टिविटी कौन ना द टेस्ट हैज क्लियर अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट स्कोरिंग मेथड ताहले हूँ सेटा ऑब्जेक्टिव. द स्टैंडर्ड डेविएशन कौन ना द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन. रिलेशनशिप which of the correlation value indicates the weakest relationship between two variables. तो weakest होची 0.
ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जेड स्कोर देख जेड स्कोर पूर्व थरक भी पकई एथर भी जेड स्कोर पकई इट इंडिकेट्स हाउ फार ए स्कोर इज फ्रॉम द मीन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट टी स्कोर एथर टे हटके पकई टी स्कोर को प्राय पिला प्रिपेयर कर नथिले कि टी स्कोर ऊपर पचार तो टी स्कोर आंसर हो 50 + 10 into raw score minus mean divided by standard deviation. What is the primary goal of a school development plan? School development plan कौन ना to enhance the quality of education and overall school performance. देखो तमें to improve the physical infrastructure भी पकई किंतु broad sense रे देखिबा हम broad sense रे देखले to enhance the quality of education and overall school performance. Which of the following is an important feature of effective school management कौन क्लीयर कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर केमती स्कूल मैनेजमेंट कमिटी कौन से केमती से 3 जन भितर स्कूल तापर पेरेंट्स आउ कम्युनिटी एम भितर केमती प्रॉपर स्टेक होल्डर जो मैंने रोते भितर प्रॉपर कोलाबोरेशन मेंटेन रही व्हाट इज ए की प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द ऑफरिंग कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट फॉर टीचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन कौन इटा आंसर हो इट सीक्स टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस बाय टीचर देमसेल्फ व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द मेकानिज्म ऑफ मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग कौन करा हुए ट्रैक प्रोग्रेस करा हुए केते प्रोग्रेस होती तो सेटा ट्रैकिंग करने तो सेटा आंसर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलो फेज कौन टू इभालुएट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस इम्प्लीमेंटेड एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट सेटा फॉलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ ए पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट तो यहाँ हूँ ए सेफ इनक्लूसिव एंड सपोर्टिव एटमोस्फियर फॉर ऑल स्टूडेंट 99 थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हेल्प टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम रिसोर्सेज तो यहाँ हूँ एनश्योरिंग ऑल रिसोर्सेज आर लेबल्ड एंड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स आज एंड व्हेन नीडेड लास्ट थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल मैनेज क्लासरूम तो यहाँ आंसर हो क्लीयर एंड कंसिस्टेंट रूल्स एंड रूटीन्स है ना तो 100 क्वेश्चन थिला 100 क्वेश्चन एया ही आंसर रही जदि किसी कौन कौटी डाउट रोचे तो सहीटा कमेंट सेक्शन में मेंशन करदेव प्रॉपर कौ नंबर रे ही डाउट अच्छी मुझे कहली 2-3 क्वेश्चन अच्छी 3-4 पाखाई क्वेश्चन अच्छी जोड़ा टी कॉम्प्लिकेटेड रही है आंसर पे हमको फाइनल आंसर के ऊपर डिपेंड करा पड़ो से चेंज हो कि से क्वेश्चन टाक ही टोटल रिमूव कराऊँ तो ये क्वेश्चन पैटर्न को देखले टिके लगुच पूर्व अपेक्षा टिके कट ऑफ हाई जापे जदि बहुत हाई न जापे तो 75-76 अराउंड रही पारे जनरल कैटेगोरी कट ऑफ तो नेक्स्ट वीडियो रे कहीदेवी केते कट ऑफ रहिले तो माने सेफ स्कोर रे रहिबो तो से जाए जो चैनल को नुआ कर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कराई नेबे वीडियो पसंद आसला लाइक निश्चय करेंगे थैंक यू सो मच।